series. So this is about the National NCD webinar, and today the topic is obesity awareness and prevention. As you know, this is a very important risk factors considering the non-communicable disease. So for this, we have an eminent speaker with us, Dr. Ramesh Agarwal. He is the ADG at NCD program, and right now he's based at LHMC. So and Dr. Swasti Chand is the chair, but because of some other meeting, he is not available right now. So we shall be taking his address afterwards. So without wasting time, as it is time constraint is there, I would request Dr. Ramesh Agarwal to kindly take on the series with all the participants. Over to you. Very good afternoon, Dr. Shikha and my colleagues, and Dr. Swasti Charan sir, who will be joining soon, for organizing this webinar on the important topic of obesity, its awareness and prevention. So without wasting any time, I would like to share my screen over here. Avdesh, can we make it from the beginning? Yes, sir. You just have to click the backend arrow on your keyboard. Yes. Yeah, thanks. Yeah, so participants, welcome you all. And let me begin this webinar by asking you a very simple question. Do you think obesity is a disease, or it is just say a cosmetic health issue for you? Like we consider कि अगर कोई हमारे पास मरीज आता है तो हम कहते हैं उसे कि हाँ आप बीमार हैं ओबेसिटी का पेशेंट देख करके, या हम यहीं तक लिमिट कर देते हैं दैट नहीं आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको बीमारी है, डायबिटीज है आपको बीमारी है, बट ओबेसिटी का डू वी रियली थिंक दैट इट्स डिजीज? So when we try to find the answer to this, we found that yes, it is a well-known disease, and WHO, World Health Organization, recognized this as a disease, and it has been classified as one of the very major disease with a lot of subheadings into it. तो हम ये बात नहीं कर रहे कि मोटा कितना है या बहुत ज्यादा मोटा है, morbid obesity की बात नहीं कर रहे. We are talking of obesity. Simple obesity means that a person is suffering from a disease. पर ये बहुत कम प्रिस्क्रिप्शंस पे आपने भी देखा होगा, या हम भी कम ही लिखते हैं, कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है या कोई नॉर्मल आदमी आता है, कोई जैसे आप स्क्रीन करते हैं लोगों को अपने पीएचसी पे, सीएचसी पे, या अपने आ, जो भी आरोग्य मंदिर पे आप स्क्रीन करते हैं लोगों को, तो उसमें आप देख करके अगर किसी और को कोई मुश्किल नहीं है और सिर्फ ओबेसिटी के साथ आता है तो क्या हम उसे बीमार घोषित करते हैं? तो ये अभी एक बहुत ही चैलेंजिंग सवाल है हम लोगों के लिए, क्योंकि शायद हम लोग इस चीज़ से अकस्टम्ड नहीं है कि ओबेसिटी को इस मात्रा में हम बीमारी की तरह घोषित कर सकें. So जब when we have agreed that this is a disease, so let us now talk what is a definition of obesity. So obesity is a chronic relapsing progressive disease, and it is defined by excessive adiposity that may impair the health. तो ये adiposity की जब हम बात करते हैं तो adiposity is simply accumulation of fat. अगर आप मुझसे पूछें, for me the simple definition is obesity is the mother, जननी of all preventable lifestyle diseases. प्रिवेंटेबल लाइफस्टाइल डिजीजेस का वो मतलब है कि लाइक हम जो डिजीज को प्रिवेंट कर सकें अपने लाइफस्टाइल से. फॉर एग्जांपल द प्रोग्राम्स विच वी आर रनिंग फ्रॉम द डायरेक्टरेट, फ्रॉम द मिशन, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, फॉर दैट मैटर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, स्ट्रोक, कार्सिनोमास, पीसीओडीज. सो और डॉक्टर अविनाश बैठे हैं, नेफेल्डी जो देखते हैं. तो ये सारे डिजीजेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और सब में हम यही कहते हैं कि ओबेसिटी अगर इसको हम बचा लें, या इसको हम प्रिवेंट कर लें, या इसको हम ट्रीट कर लें, तो प्रोबेबली आगे वाले आने वाले डिजीजेस कम हो. सो एडिपोज टिश्यू अगर हम बात करें तो एडिपोज टिश्यू इज नॉट सिंपली समथिंग विच इज फैट. सो इट इन इटसेल्फ हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन. तो अगर आप लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे देखें तो ये सारी चीजें, ये जो एक हमारा एडिपोज टिश्यू है, फैट सेल है, सब सिक्रीट करता है. इसके अंदर एडिपोसाइट्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, एंडोथेलियल सेल्स हैं, मैक्रोफाजेस हैं, स्ट्रोमल सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं,
और ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। द हार्मोन्स विच आर प्राइमरली ऑफ इंपॉर्टेंस इज लेप्टिन एंड एडिपोकाइंस। ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं। प्रोबेबली हमें जो इसमें समझना ये है कि ये सारे जो हार्मोन्स या जितने भी ये ट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं, सो दीज ऑल कंट्रोल द वेरियस बॉडी फंक्शंस। अगर आप राइट साइड पे देखें तो कोगुलेशन, इम्यूनिटी, एपेटाइट, रिप्रोडक्शन, पीसीओडी, एंजियोजेनेसिस, फिब्रिनोलाइसिस, और ये सारी चीजें जो हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय दिस फैट। तो अगर फैट का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, बॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हैं इस फैट से खराब हो जाएंगे, तो प्रॉब्ली हम अपने आप को एक वी आर लैंडिंग आवर सेल्फ इनटू अ रियल ट्रबल। सो जब बात करिए फैट की, सो लेट अस ब्रीफली डिस्क्राइब वेयर दिस फैट accumulates. सो फैट कैन बी accumulated in the subcutaneous tissue. आप में भी है, मेरे में भी है, सब में है फैट। द प्रॉब्लम कम्स व्हेन दिस फैट is in excess and then it gets back from the subcutaneous tissue and it enters the viscera. Viscera means जो हमारे organs हैं उसके आसपास जमना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेट के अंदर चला गया, हार्ट के पास आ गया। एडिपोस टिश्यू जैसे हम फैट कहते हैं, वो इट कैन बी ऑफ थ्री varieties: white, brown and beige. So what we are concerned today is of the white adipose tissue जो कि distributed होता है। It can be in the subcutaneous areas and it can be in the visceral area. Subcutaneous की हमने बात कर ली है, जो कि स्किन के नीचे, चमड़ी के नीचे। विसरल मीन्स दैट इट इज नाउ इन द somewhere near the organs. So subcutaneous tissue, which I have told you, it's basically under the skin and it acts as a metabolic sink जहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे होते हैं। When the ability of our body of the adipocytes भर जाते हैं, किसी गुब्बारे के अंदर पानी भरते रहोगे तो निकलेगा, निकलेगा या फटेगा। So this happens to the adipocytes. Either they become hyperplasic or they increase in number. So subsequently this fat, when it exceeds the capacity of the adipocytes to hold, it will start accumulating in the viscera. तो ये साइड से जहां जहां इकट्ठा होना शुरू होता है फैट्स: इंट्राहिपैटिक, एपिकार्डियल, पेरीवेस्कुलर मींस वेसल्स के पास भी, वेसल्स के अंदर भी, मेजेंट्रिक, ओमेंटल, रेट्रोपेरिटोनियल, मतलब पेट के अंदर सब जगह ये फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है व्हेन द capacity of the subcutaneous tissue to hold the fat is exceeded. So why we are so much concerned about this fat which is being accumulated in the viscera? तो होता क्या है कि ये फैट जो है, दिस इज डिफरेंट देन द सबक्यूटेनियस फैट। हाउ इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब है कि दैट इट इज मेटाबोलाइज फास्टर एंड द फैट, द ट्राइग्लिसराइड्स व्हिच आर रिलीज्ड, दे एक्चुअली एंटर इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन, डायरेक्टली अफेक्टिंग द लिवर। सारी प्रॉब्लम्स जो है, हाइपर इंसुलिनीमिया, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, डिसलिपिडीमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, सो दिस 4 or 5 things you all know are the basic mechanism, basic fundamentals for any disease to happen, and the contributors to this disease is the excessive fat which accumulates in the body. So when we talk of the obesity, there must be some classification, and I am sure बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। How do we classify obesity? दो अलग अलग पॉपुलेशंस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कॉकेशियंस में और साउथ एशियंस में। BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स, वेट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय द हाइट इन मीटर स्क्वायर। बहुत सारे लोग इसको करते हैं, आप भी करते होंगे और हम भी करते हैं। तो इसमें ये क्राइटेरिया दिए हुए हैं जो कॉकेशियन पॉपुलेशन के लिए डिफरेंट है और साउथ एशियंस के लिए डिफरेंट है। ओबेसिटी को हम डिफाइन कर देते हैं जब इट इज मोर देन 27.5। तो सवाल ये आता है कि दोनों पॉपुलेशन में ऐसा क्या डिफरेंस है कि इनमें तो बहुत सारे लोग खा रहे हैं, बहुत मोटे हैं, इनसे ज्यादा मोटे हैं, पर यहाँ पर जो कि 23 या 27 जो वैल्यू है वो इससे कम है, बट तब भी इनको ओबीस क्लासिफाई कर रहा है। तो साउथ एशियंस में ऐसी क्या बात है कि हमें जल्दी मोटापे की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा रहा है? So why there is a difference in this criteria for subset of the populations? The reason came from a study which was done and found in Lancet in years back. They found that when they compared two individuals, one was Dr. Yajnik, he was a physician of the Indian origin, and one was similar, Dr. Yudkin, he was of Caucasian origin. And if you see in the figure, they both have some similar structure. अब मेरे और डॉक्टर अविनाश के बीच में ऑलमोस्ट, डॉक्टर अविनाश हम एक जैसे दिखते होंगे, पर हो सकता है हमारे फैट में बहुत फर्क है। तो ये इन्होंने भी यही देखा। अब आई डोंट नो कि डॉक्टर अविनाश डॉक्टर याजनिक है या मैं डॉक्टर याजनिक हूँ, बट ये देखा गया कि दोनों के बीएमआई तो सेम है, पर दोनों का जब फैट देखा गया तो जो डॉक्टर याजनिक थे इनके अंदर फैट कंटेंट बहुत ज्यादा था,
तो ये एक अलग बात सामने आई, इसे वाई वाई पैराडॉक्स के नाम से जाना गया। तो इसी से आगे रिसर्च शुरू हुई कि ऐसा क्या है बीएमआई के अंदर, ऐसी क्या खराबी है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द डेफिसिट्स, व्हाट आर डेफिशिएंसीज which are there in BMI, which actually give a false impression that the patient is not obese. तो इसी से बात शुरू हुई कि बीएमआई जो है मसल और फैट में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती। सपोजिंगली कोई बॉडी बिल्डर है या कोई बहुत ही मस्कुलर मैन है, जैसे हमारे एडिशनल डीजी सर हैं, तो उनको कंपेयर करें तो अगर उनका बीएमआई देखें तो बीएमआई हो सकता है ज्यादा आ जाए, पर उनके अंदर फैट नहीं है, उनके अंदर मसल सारी है। और ऐसी एल्डरली पॉपुलेशंस में देखें कि जिनके अंदर मसल कम हो जाती है तो फैट एपरेंटली ज्यादा हो जाता है। तो ये डायकोटमी देखी गई कि फैट और मसल को डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है बीएमआई से। और ओबेसिटी में इस पे बात पे दोबारा आता हूँ। एक ये डायग्राम देखिएगा कि इसके अंदर सेंट्रल ओबेसिटी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द एप्पल शेप एंड द पियर शेप इज व्हाट वी सी दैट द फैट इज not deposited in the abdomen, it is deposited in the like gynecoid morphology as in females. So this particular morphology where there is a central obesity, it is harmful. तो अब इस पे बात आ गई कि जब देखा गया कि BMI is having some problem, it may not actually find out the exact number of obese people. So it came the concept of some other indices, amongst which waist circumference was found to be really useful, practical, and they defined as that in men who have got a waist circumference of more than 90 centimeter and in females who have got a waist circumference of more than 80 centimeter, so they will be categorized as obese. And this is what you do at your level. और बहुत लोगों को आप स्क्रीन करते हैं, और एक दिस इज एक्चुअली समथिंग वेयर यू कैन इंटरवीन। हमारे पास तो इधर टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में तो आई थिंक जब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ द ओबेसिटी दे स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, so then people start rushing, but you are the one who actually screen the people from where you can prevent the disease. So you take this measurements, and one advice from my side is that when you take the measurements, you do it appropriately, correctly, and if you found that the patients are obese, so give at least a word of advice to them so that the future complications can be prevented. तो एक सर्वे किया गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसमें देखा गया कि एब्डोमिनल ओबेसिटी 40% वुमेन में है, 12% मेन में है सेंट्रल ओबेसिटी। लेकिन अगर इनों में ही बीएमआई से देखें तो बीएमआई से इट वाज जस्ट 23%। सो ये डिफरेंस देखा गया कि ये बीएमआई जो है बहुत कम लोगों को पिकअप कर रही है, ओबीस लोगों को, बट इट इज मोर देन 40%, बहुत ज्यादा लोगों को। या ये कहिए कि इट कैन, इट इज वेरी सेंसिटिव टेस्ट टू डिटेक्ट द ओबेसिटी। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो सदर्न स्टेट्स, कुछ लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया होगा यहाँ पे सदर्न स्टेट से भी, so we found that the prevalence of obesity was found to be higher in some states like Kerala and Tamil Nadu. North India mein Punjab and Delhi, they were found to be having more prevalence of obesity. Lucky states were Jharkhand, Madhya Pradesh, and some more. So maybe we can learn some lessons. Maybe we can have some advice from these states, that is it the ethnicity, is it the environment, is it the food habits which are keeping them less obese. दो कंसेप्ट आए, मेटाबॉलिकली अनहेल्दी ओबीस और मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबीस। नाउ व्हाट इज दिस? इट इज दैट मैं मोटा भी हूं और हेल्दी भी हूं, मैं मोटा हूं लेकिन अनहेल्दी हूं। तो ये दो कंसेप्ट आए, लेकिन इसमें यही देखा गया कि जो कुछ ओबीस लोग ऐसे हैं which were metabolically healthy, that means if we studied them, we do a research, we found that the harmful hormones, the inflammatory markers, they are not as prevalent, as advanced as in some obese who do have some hormones like adiponectin, lectin, resistin, and all these things which are more as compared to metabolically healthy obese. But it does not mean that these metabolically healthy obese, they are safe or they remain healthy. Sooner or later, these metabolically healthy obese, it was observed that they will be converted into metabolically unhealthy obese. So दो concept I thought I will share with you. So while we're discussing all this, what is the problem of the obesity? Now, obesity, if you see this chart, so it actually involves all of the problems which we are going to discuss in the future webinars.
So जो मैंने पहले कहा था कि it is the basically the mother of all diseases. So it can lead to hypertension, it can lead to carcinomas, it can lead to osteoarthritis, it can lead to sleep apnea, diabetes, NAFLD, and many other chronic liver diseases, many other chronic lifestyle diseases. So these are the complications of obesity. So it's better to prevent the obesity. So now coming to what is the management. So if you ask that, is there a solution to obesity? Can we prevent it? Can we treat it? So yes, there is, but it needs a conscious effort from the participants, from the patients. It cannot be that only, it cannot be a one-way business. It cannot be that we say and the other person will reduce weight. So conscious effortness and willingness is a must. But the problem with obesity is that most of us, we realize that it is just the cosmetic effect. It is just that the shape of the body, that how we look will matter. And if that result is not obtained, so probably that whatever we are going to do, whatever we try for the obesity, that is not going to help. So, but we must understand that treating obesity is not only getting a good shape, getting a good look, but it is like increasing, it is like benefiting your metabolic health. So the problem which are seen with obesity is that more women seek help in managing obesity than men. There is a mismatch between the patient's goal for weight loss. हम सोचते हैं कि शायद हम 5 किलो कम कर लेंगे और वो भी 15 दिन में, तो प्रोबेबली ये जो मिसमैच है, अगर आज नहीं खाया, एक हफ्ते तक नहीं खाया, या हफ्ते में 2 बार उपवास कर लिया और फास्टिंग कर लिया, एंड देन वी फाउंड that we will lose around 2 to 3 kg. So that perception is a mismatch. So there should be realistic goals for reducing weight, for reducing obesity. So ultimately, diet and exercise are going to help. You cannot sit and eat whatever you feel like. So you have to move. You have to reduce in your content. So briefly, what actually does the guidelines say about diet when you want to reduce the obesity? So it says that 1200 to 1500 kilocalories per day for women. You really want to reduce the obesity. But ये कहना सिंपल है शायद, बहुत सारे लोग मेरे से इस बात से शायद इत्तेफाक रखेंगे कि it is not easy to reduce the diet. And 15 to 20% of the daily calories should be derived from proteins, not more than 20 to 30 from the fat, and remaining should be from carbohydrates. These are the standard guidelines which most of us know. कुछ अच्छी अच्छी पिक्चरें देख लेते हैं पहले. सो वन इज दिस हेल्दी, यहाँ पे बहुत सारा कुछ खाने को मिलता है ऑन द लेफ्ट साइड, एंड दिस इज द अनहेल्दी फूड पिरामिड. दोनों पिरामिड है, इट्स आवर चॉइस व्हाट वी वांट टू हैव. डॉक्टर श्वेता मेरे ख्याल में अगले वेबिनार्स में कुछ अच्छा हेल्दी अरेंज करेंगी, प्रॉब्ली ऑन द लेफ्ट साइड एंड नॉट ऑन द राइट साइड. सो प्रोटीन का एस्टिमेट ये है कि 0.66 प्रोटीन पर केजी पर डे इज द रिकमेंडेशन. सो मोर 10 to 15% ऑफ द एनर्जी शुड बी फ्रॉम प्रोटीन. प्रोटीन के बारे में एक स्लाइड और ये अच्छी रहेगी कि वी हैड अ कल्चर ऑफ ईटिंग खिचड़ी एंड थिंग्स व्हिच आर नाउ प्रॉब्ली वीनिंग ऑफ. ये सिर्फ बीमारों के लिए दी जाती है अभी आजकल मेरे ख्याल में, बट एक्चुअली if you look at the concept, so the idea here was that there are some essential amino acids which are missing in the pulses. There are some essential amino acids which are missing in the cereals. So if we combine these two grains and eat them, so probably we are able to replenish all our missing amino acids from the body. So the old concepts say they are very good. So we must learn and try to adapt from our dadi nani, what had been there in our culture. फैट्स के बारे में एक धारणा है कि मैंने रोटी चुपड़ी नहीं खाई, मैंने घी नहीं लगाया, मैंने तेल नहीं लगाया, डॉक्टर साहब मैं तो खाता नहीं हूँ तेल और फिर भी मैं मोटा हो रहा हूँ. तो एक हमें बात ये ध्यान रखनी होगी कि देर इज समथिंग कॉल्ड एन इनविजिबल फैट. तो अगर डॉक्टर अविनाश, अगर आप सूखी रोटी भी खा रहे हैं बिना चुपड़ी हुई, तो आपको मान के चलना होगा कि इसके अंदर भी जो है ना 2 to 3% आप एक रोटी में फैट खा लेते हैं. तो अगर आप 3 चपाती भी खा रहे हैं और साथ में रात में चावल खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्वांटिटी पूरी हो जाएगी. तो देर इज नो नीड टू ऐड एंड दैट चुपड़ने की रोटी की. सो ये सबके लिए, ये डॉक्टर अविनाश के लिए नहीं, मेरे लिए भी है. तो बाकी अब ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं, बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज दिस. सो देयर आर सम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स व्हिच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड इन द बॉडी, एंड लाइक
ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बहुत कॉमन है और बहुत सारे कैप्सूल से बिकते हैं, इसके बहुत बड़ी मार्केट है, फार्मा इंडस्ट्री इसकी बहुत ज्यादा है। बात थोड़ी ठीक भी है और थोड़ी खराब भी है, क्योंकि ये सब हमारी नेचुरल डाइट में मिल जाएगा। ये टेबल बहुत अच्छा और सुंदर टेबल है। बहुत सारी सीड्स ऐसी हैं, बहुत सारे खाने ऐसे हैं जिसके अंदर ये सब कुछ अगर हम खाएं तो मिल सकता है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए ये फिश और ऑयल है, मैं तो नहीं खाता, लेकिन मैं फ्लेक्स सीड खा लेता हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो आप भी इस टाइप की कुछ चीजें अपने खाने में लेकर के आ जाएंगे तो एक हेल्दी डाइट से हमें बाहर बहुत सारा सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल और बहुत सारी चीजों के बारे में आजकल एक और धारणा है और कहीं हद तक ठीक भी है। तो एक ये टेबल बता रहा है कि किसके अंदर हमारे सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा हैं, किसके अंदर हमारे मोनो अनसैचुरेटेड ज्यादा हैं, किसके अंदर हमारे अनसैचुरेटेड ज्यादा हैं। पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड ज्यादा बेटर है हेल्थ के लिए। सैचुरेटेड फैट्स हार्मफुल हैं, ट्रांस फैट्स और हार्मफुल है। समोसे को बार बार तल करके जो हलवाई खिलाते हैं वो आपको सबको पता है कि उसमें जो फैट है वो ट्रांस स्टेट में चला जाता है। वी शुड अवॉइड दैट। दो तीन एक अच्छे फिगर्स हैं, ये अच्छा खाना है। इफ यू ट्राई टू अडॉप्ट दिस, ये सब आईसीएमआर से ली गई हैं, तो आईसीएमआर की साइट पे जाकर के आप भी इनको अपना सकते हैं। दिस इज द हेल्दी ब्रेकफास्ट, दिस इज द लंच, दिस इज द डिनर एंड इवनिंग। मेरे को लग रहा है बहुत सारा खाना है इसके अंदर, प्रॉब्ली अगर हम इतना सारा हेल्दी खाएं तो भूख लगने की कोई गुंजाइश नहीं है। दैट वाज फॉर अ मेल, दिस इज फॉर अ फीमेल। So this is all available on the internet, so we may not like to discuss it further, but yes, ये एक my plate for the day है। अगर इतना खाना रोज मिल जाए और इस तरीके से सजी हुई प्लेट, तो ओबेसिटी का रीजन ही नहीं है। इतना खाने को भी मिलेगा एंड वी विल नॉट बी फीलिंग ओबीस एंड वी विल लूज वेट। So coming to now the actual fact, how to reduce weight or how to reduce fat. तो डॉक्टर शिखा तो is not fat, so but still she can listen to me, ma'am. So, but the concept here is that if we reduce 500 kilocalories per day, अगर हम 500 किलो कैलोरीज अगर रोज की घटा देंगे अपने खाने से, एंड इफ यू कंटिन्यू इट फॉर से अ वीक, से 3500 किलो कैलोरी अगर हम हटा दे खाने से, तो ये देखा गया कि वी कैन रिड्यूस अबाउट हाफ अ केजी। सो वेरी सरप्राइजिंग, बट ये फैक्ट ही है। 500 किलो कैलोरी में अगर आज हम अपने वेबिनार के अंदर डब्बा जो है आ, हम नहीं खाते या हम थोड़ा सा लंच स्किप कर ले डॉक्टर अविनाश, तो हमारा और ये एक हफ्ते तक वेबिनार्स में नहीं खाते तो प्रॉब्ली आधा 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 किलो हम रिड्यूस कर लेंगे। बट ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में, ये सच नहीं है। तो इसका मतलब तो ये होगा कि एक महीने के अंदर हम बहुत सारा वजन ही लूज कर लेंगे और 6 महीने में तो कुछ रहेंगे ही नहीं। तो ये एक फैक्ट है कि थोड़े टाइम के बाद में जो शुरू का 5 से 7 किलो कम होता है, उसके बाद में ये वजन उतनी गति से उतनी स्पीड से नहीं गिरता, बिकॉज देन द हार्मोनल प्रोफाइल, हार्मोन्स ऑफ द बॉडी दे कम इनटू एक्शन, and because of that the weight reduction which was expected as a 0.5 kilogram per week, it doesn't happen in that speed which it was supposed to happen. But yes, whatever calories you reduce in your diet, they are certainly going to help you, whether it is in the form of weight reduction or may not be in the form of a weight reduction. So calorie intake should be reduced. That is the must thing. So we are running short of time. I will just be very quick in this. Glycemic index और glycemic load के बारे में अगर हम बात करें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो खाना है कि जो जितनी जल्दी ग्लूकोज रिलीज करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, शुगर की आपको बढ़ाएगा। तो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कुछ खाना खाने चाहिए। आटे को मिक्स करने का ट्रेंड है, तो उसका यही ट्रेंड होता है कि जो सिंपल आटा है, जो व्हीट है या जो पॉलिश्ड आटा है, उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि हमारा ग्लूकोज बढ़ जाता है बॉडी का। एनर्जी डेंस फूड के बारे में एक बात कही गई है कि जितना डेंस एनर्जी होगी खाने के अंदर, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर आप ये लेफ्ट साइड को बाउल देखेंगे तो इसकी कैलोरीज और इस राइट साइड वाले बाउल की कैलोरीज बराबर हैं। तो इतना खाओगे तो बार बार खाओगे, इतना खाओगे तो कैलोरीज भी कम खाओगे और काफी सारा खा लोगे। तो एनर्जी डेंस फूड का मतलब है जिसके अंदर फैट कंटेंट कम हो खाने का। तो इसीलिए कहते हैं कि तरबूज और खरबूजा जो है खाने में जरूर खा लें, क्योंकि उसका फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो सिमिलर एग्जांपल इज डिस्प्लेड इन दिस स्लाइड। So there are very low density food, there are low energy density food, medium energy density and high energy density. So we all know that fruits and vegetables जो कि हमें खाने चाहिए, so they are very low energy density, but there are things like nuts, cookies, butter, oils, crackers, they are very high density. तो पेट इससे मत भरें, इसको खाना ही है तो टेस्ट के लिए खा लें, पेट इससे भर लें ऊपर वाले से। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक बहुत रोल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए बहुत सारी बातें भी होती हैं, क्वेरीज भी आती हैं, बट मेरे ख्याल में
इंटरमिटेंट फास्टिंग का यही मतलब है कि अगर आप 7-8 बजे तक खाना खा लें और ब्रेकफास्ट को लेट कर लें सुबह, तो अपने आप ही वो 12 से 15 घंटे के ऊपर टाइम हो जाएगा, और दैट इज एक्चुअली द इंटरमिटेंट फास्टिंग। डाइट्स बहुत तरीके की अवेलेबल हैं, बहुत सारे डाइटिशियंस इसके ऊपर बात भी करते हैं। अल्टीमेटली द गोल विल बी दैट इफ यू रिड्यूस द कैलोरी कंटेंट ऑफ द फूड फ्रॉम 500 to 700 per day, so you are certainly going to lose the weight. Physical activity, हाँ, 150 minutes per week is important, but if you really say that 150 minutes per week of walking या 30 मिनट रोज की वॉकिंग से वेट रिड्यूस हो जाएगा, सो दैट मे नॉट बी अचीवेबल. फॉर दैट यू नीड टू एक्सरसाइज एंड वॉक मोर, maybe around double of that, so you will be able to achieve a weight loss, but not to that tune as the calorie reduced calorie intake will do. अगर कोई 10,000 स्टेप चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नहीं चल पा रहा तो उसका ये मतलब नहीं दैट वी शुड स्टॉप वॉकिंग. So any increase in the steps in walking will certainly help. Maybe around, if someone is walking say 5,000, he can increase by 500 per day, and this way something will be added. So there are types of exercises like endurance exercises. They include aerobic, dancing, swimming, biking, and anything which needs a lot of physical exertion. Then there are some strength gaining exercises, which includes lifting weights and some arm curls, wall push, etc., etc. And yes, there is a resistance band also, which some of our colleagues, some of our seniors also use, and probably for especially good for those who are not able to afford time because of the busy work schedule. So you can just pull those bands. And Dr. Avinash, I hope you know who I'm talking of. And then there are resistance versus aerobic exercises. So these are also beneficial for the health. Isotonic, isometric exercises, which we have just discussed, that where the length does not change is the isometric, where the length of the muscle change is the isotonic. Both are beneficial for the health. Vigorous versus moderate, yes, some amount of exercise will be good for your any health, but if you are aiming for a weight loss, some moderate to vigorous exercise will be better rather than mild exercise. Behavior therapy is that what I wish to say is that अगर किसी ने आज डेजर्ट खा लिया, अगर मैंने सैंडविच खा लिया अभी, तो ये नहीं कि मैं आई शुड जस्ट कर्स माई सेल्फ. द एम शुड बी यस, अगर मैंने आज खा लिया तो मैं शाम का थोड़ा सा एक चपाती कम खा लूं. सो दैट शुड बी द गोल rather than cursing yourself. So take home messages that realize that obesity is a disease that give rise to many other diseases like hypertension, diabetes, cancer, and whatever we talk about in these programs. The originator, the janani will be the obesity. So we must help to prevent it. Prevention of obesity can prevent or at least delay many diseases, and adopt simple ways of healthy food eating. And don't wait for the day when you start exercising. Just walk, and try to screen more patients at your center and give them fair advice. So transform your body and transform your life. So probably it will help all of us and our national programs. Thank you very much for giving me this opportunity to speak. We are ready for any questions and discussion. Thank you. Yeah, thanks from my side. Dr. Ami, it was really a wonderful explanation to understand that obesity is a disease, and actually this is a major risk factor for all our non-communicable disease which are being considered under the national program. Sir, there is one question from my side. There is Yes, ma'am. something known as metabolic heart rate also. So one has to calculate what's the actual means for the optimum weight loss. One should know how to calculate their heart rate to maximize the control. See, madam, metabolic heart rate is something which some trainers do in their routine practice, like someone who is jogging or who is somewhat, I will not say who is aiming for the obesity treatment. It is somewhat who is trying to physically gain that endurance of this thing. So, in general, anything which it is that we are not aiming for some bradycardia or tachycardia, if I have to be more technical. The heart rate should always be maintained with somewhere between 70 or 100. So yes, if you are doing a brisk walk, so brisk walking means that it will certainly be helpful in giving you a weight loss, but that should not increase your heart rate to a level where you feel discomfort and where it goes into the palpitations. So that's briefly what I have to say. Some people say it's better to have the inch loss rather than the weight loss. So that is the truncal obesity. I think it refers that. So
which you have detailed it very well. Yeah, so actually, this is a very pertinent, very good thing, very good question. Uh, if you really see the process of weight loss, if someone is trying to decrease the calorie content, walking and doing something for his health, so the first thing which will lose weight is the trunk. So automatically that inch loss will be reflected in the weight loss. So the two things are going to do simultaneously, but yes, probably there may be some mismatch, like weight loss may be more than the inch loss, or inch loss may be a little lesser than the weight loss. Yeah. So, any other question? Just one. What are There are a few questions which have been raised in chat box. What are the approved methods available for measurement of obesity other than BMI? I think already Yeah, answered. so I think that has been displayed in the slide also. We can share it with them. So of course, waist circumference is one, waist height ratio is there, which are standard methods. Apart from that, neck circumference and things like that are more in the research. Then there is a body fat percentage, which is a very expensive thing for all practical purpose and for really screening them. I think waist circumference, waist height, and these things are the standard methods. Ma'am, you are muted. Yeah. Okay. Any question in the chat box? April? One more thing, I think many people must be liking to ask. Children, usually we like the child or children who are on the plumpier side. So, any takeaway message for the children to prevent the overweight and obesity among? Yes, ma'am. I think this was not mentioned in my presentation also. And probably this topic is very close to your heart also, and mine also. So childhood obesity is वही है मैम कि जैसे अगर हम बीज अच्छा बोलें, है ना, और उसकी अच्छे से उसे पानी दे दें तो अच्छा ही फल निकलेगा। प्रॉब्लम यही होती है कि प्रॉब्लली हमारी केयर में या बच्चे की लापरवाही में या हमारी लापरवाही में, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दोज रेयर जेनेटिक डिजीजेस, वी आर जस्ट टॉकिंग ऑफ दोज लाइफस्टाइल डिजीजेस वेयर अर्ली इंटरवेंशन अर्ली इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ जस्ट रिड्यूसिंग द जंक फूड, अगर उसको शुगरी फूड, मीठा बंद कर दें या मीठा कम कर दें, एंड द जंक फूड, द फ्राइड फैटी, अगर हम टाइमली उसको हटा दें, और बच्चे तो खेलते ही हैं मुझे लगता है, तो प्रॉब्ली उस पार्ट में तो हमें बहुत एम्फेसाइज नहीं करना होगा। इट इज जस्ट द डाइट एंड द स्क्रीन टाइम, इफ वी कैन रिड्यूस इट, प्रॉब्ली वी विल बी एबल टू गो अहेड with our many the national goals which we want to achieve for children. There is one more question in the chat box. Many times there is habits of craving over food. How to overcome this? Also, many times there is problem of appetite in night, and how much target should be there in the month to lose weight? I think it will vary with the weight of the person. It cannot be a tailor-made thing. It has to be tailor-made. Yeah, see, actually, I wanted to address this issue also, but probably there are a series of seminars which will be addressing towards, particularly towards what to eat and what not to eat regarding the diet content also. So that's why I skipped it. But if we just remember one thing, the last part I would like to address first, that how much weight we can reduce, number one, and what should we decrease. So if you just take the simple principle that you reduce the calorie content of your food, say from 400 to 600 of kilocalories, so that is really going to benefit. Now, the first two questions were that what should we do when we feel craving for the food? So craving for the food is but natural. Eating salads and fruit will certainly satisfy you. The thing which you should remember is, you should, if you are having a craving for food, low energy density food and foods with low glycemic index. So if you take and supplement your diet when you feel craving for food, so at least they will help you in not gaining the weight. Yeah. Yeah, sure. I think few questions have been regarding some hormonal imbalance. So accordingly, they have to reach the endocrinologist to treat the basic Yes. problem. If it's a thyroid disorder, then they have to get the treatment for the thyroid. If some of the PCOS, then they have to get it treated. And the weight reduction is the mainstay of all. So it's a vice versa, I suppose. And Yes, again, ma'am.
just emphasizing your point, we have to balance our intake with the output. So Yes, if we yes. have taken more, so we should make an effort to have the physical activity increase for that day at least, so as to have a rough balance. Yes, ma'am. So I think now with this, I would request Dr. Vinash Suntharia to give a closing remarks for this session. Sir, thank you for that comprehensive presentation, and there was no better way to start this webinar series other than the topic of obesity. As you have rightly mentioned in your presentation, that obesity is the mother of all preventable lifestyle diseases, and that too NCDs which we are talking about. And the concept, the various key points which you have explained, that we are joined in by all the district nodal officers of NCDs. So, and of course the CHOs as well from all the districts of the country, and the take-home messages which you have very rightly conveyed to them, that when the patient is coming to them at the Ayushman Arogya Mandir or the PHC or the CHC with the simple waist circumference, that is 90 centimeter for the male and 80 centimeter for the female, they can decide about obesity, and they can educate the patient about diet and exercise they have to undertake. Then the concept of khichdi and the healthy pyramid, which you have explained, the colorful plate, the ICMR, NIN, this healthy diet concept, which you have explained very rightly. Then the low density foods, that is fruits and vegetables, which we should have. The difference between a low density food, which makes our stomach full, but then it doesn't give too much of calories as compared to the high density food. And intermittent fasting, you highlighted the concept, and how behavior therapy, that if we are having more food, then there is no need to curse ourselves. Let us not, if we have a heavy lunch, then maybe the dinner we can have lesser calories. So it was all very informative, sir, and all the officers from all over the states who have joined, they would have definitely benefited. And we are from the NCT division, sir, we are very thankful for your time, sir. Thank you so much. Thank you. So thank you, Dr. Ramesh Agrawal sir, and all the participants who have joined us online. Just to emphasize, we have just started this webinar series, so kindly look into the calendar which have been shared with you for the next thing. So again, the next webinar series shall be on the breast cancer, taken up by Dr. Sunny Swankar. It's on the date is 2nd of August. So kindly make sure that you attend this. So looking forward to you all for your contribution. In case if you have any support or query, you can again write to us anytime to the program division. With this, thank you very much. Close. Thank you.